हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सीएससी गाइस। इस चैनल को बनाने का मोटिव यह है कि हम आपको हेल्प आउट कर सकें सीएस और आईटी सिलेबस कॉन्सेप्ट्स पर और डिफरेंट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स पर। सो विद दिस लेट्स गो टू आवर टुडेज टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोग्राफी? आप जानते होंगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। क्रिप्टोग्राफी इज नथिंग बट टू रैप द टेक्स्ट with some key to encode into a cipher text. So cryptography basically यही होता है। So हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। So what are the contents today? So first we are going to read about introduction, terminology, what are the terminology comes into cryptography, then cryptography methods, difference between methods and application. So cryptography. So what is cryptography? Cryptography is a method of securing information and communications by encoding it in a way that only those who are supposed to understand and process it can. Means क्या हुआ? क्रिप्टोग्राफी एक मेथड है जो कि हमें सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बाय थ्रू सम कीज। हम उसे अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। वो की सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास होगा तभी वो उसको मतलब पढ़ सकेंगे, ठीक है। सो क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। सो क्रिप्ट एनालिसिस हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस दोनों के दोनों क्रिप्टोग्राफी से कनेक्टेड है। बोथ आर कनेक्टेड विद क्रिप्टोग्राफी। माइक्रोडॉट्स, मर्जिंग वर्ड्स विद विजुअल्स एंड अदर टेक्निक्स फॉर हाइडिंग इंफॉर्मेशन is also the example of cryptography। मतलब microdots, merging words में combining different words, ठीक है। visuals में हमारे स्टेगनोग्राफी आ जाते हैं, वो भी हम आने वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ये सारे एक एग्जाम्पल हैं क्रिप्टोग्राफी के। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिक क्रिप्टोग्राफी। सो क्लासिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एज यू ऑलरेडी नो इन आवर एंशिएंट टाइम ऑल्सो that rajas and maharajas, they are sending some messages to their soldiers in that encoded form so that the other peoples can't study that, means their enemy they can't able to study that. So what they are doing, वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब अपने जो भी क्या बोलते हैं टेक्स्ट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होते थे, वो एक स्टिक के अराउंड लिख के राउंडेड टेप में क्या बोलते हैं बांध के देते थे, सो दैट कोई भी दूसरा आदमी उसे समझ ना पाए कि उसमें क्या है, क्या वो स्ट्रिक है, ये उसमें क्या है मैसेजेस। सो ये था क्लासिक क्रिप्टोग्राफी। सो उसके बाद आया अपना कंप्यूटर एरा। सो कंप्यूटर एरा में क्या हुआ बेसिकली कि हमने पहला क्लासिक क्रिप्टोग्राफी किया, फिर कंप्यूटर एरा में क्या हुआ कि हम लोग क्रिप्ट एनालिसिस यूज करने लगे, जो कि काफ़ी टाइम चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग था। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी it's coming less, the time is reducing and the effort is reducing. With the help of computer we can just encode our data just in a minute or 10 minutes or more less than that. So what we are doing here in computer era? So there are there is sender and receiver. Two nodes are there, sender and receiver. So first we have plain text. Plain text means a to z, whatever is there, your hello, hi, or you are sending some messages in WhatsApp or in Facebook, Insta, that hello, how are you. So that is plain text. And then we are encryption or encrypting. So encrypting means encoding or just converting that word that plain text into another form. So with the encryption is done with the help of a key. So what is a key? That also we will study next. So with the key we can encrypt that into a cipher text, means your plain text is there, then we are giving a key to key and then we are encrypting and then we will get the cipher text. The final product is cipher text. Then at the receiver node, what will the receiver will do? So receiver, what he will do, he or she will do that cipher text, he or she whatever he got, he will apply the key that sender have applied and then he will decrypt it and get the plain text. So basically इसमें क्या हो रहा है कि दो नोड होते हैं सेंडर और रिसीवर के। पहला नोड जो सेंडर रहता है वो उसके पास प्लेन टेक्स्ट रहता है, हेलो, हाउ आर यू, वॉट एवर, ठीक है, जो भी मैसेजेस है आपके।
ठीक है, उसको एक की के थ्रू वो इनक्रिप्ट करते हैं, फिर उससे साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं। साइफर टेक्स्ट ओरिजिनली क्या होता है, एक इनक्रिप्टेड डाटा रहता है, ठीक है। फिर रिसीवर एंड पे क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसके पास साइफर टेक्स्ट उसे मिल गया, ठीक है, तो वो साइफर टेक्स्ट वो सेम की यूज करता है जो कि यूजर ने सेंडर ने इनक्रिप्ट करने के लिए यूज किया रहता है, फिर उसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। So terminology. So plain text. So plain text. What is plain text? Plain text is just a normal text. Your general messages, hi, hello, E to Z, whatever it is. It's a readable text. Anybody can read it. And after that, ciphertext. So ciphertext is the encoded form of plain text. Means we are applying an algorithm or a key to generate the ciphertext. साइफरटेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, इनकोडेड फॉर्म ऑफ मैसेज, जो कि सिर्फ सेंडर या रिसीवर जानता है कि क्या है उसमें, मतलब साइफर क्या उसमें मैसेजेस हाइड कर रखे हैं, ठीक है। फिर इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन मीन्स इनकोडिंग. जस्ट नॉर्मली आई विल टेल दैट इट्स इनकोडिंग. जस्ट we are converting the true meaning to a meaningless word, so nobody can understood that what is the meaning of that sentence. So next is decryption. So decryption is the deciphering. You can tell deciphering also. डिक्रिप्शन क्या होता है कि हम कोई की लगाते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट पे, उसके बाद हम उसे रिसीव करते हैं, तो वो हमारा डिक्रिप्टेड मैसेज होता है. बाय द की और विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड वी कैन डिक्रिप्ट अ मैसेज एंड गेट इट इनटू रीडेबल फॉर्मेट. सो की. नेक्स्ट टॉपिक इज की. सो व्हाट इज की? एन इंक्रिप्शन की. An encryption key means key is a variable value, means whatever you can give key. It will be in alphanumeric or you can say numeric or alphabet also you can give to encrypt or decrypt a message. A key is valuable in encryption, means without a key you can't encrypt or decrypt an encrypted message or decrypted message. It's a particular length or it will be a variable length message which you will use to encrypt or decrypt the message. So here is the diagram of encryption and decryption. तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, वो हम कोई की लेते हैं. अब की तो मतलब डिपेंड करता है, किसी किसी एल्गोरिदम में की वेरिएबल रहता है, यू कैन गिव योर ओन, और इन अदर एल्गोरिदम्स there are some algorithm in which key is given as default, means you have to apply that key only, and in other algorithms you can give your own key. So हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें की लगा रहे हैं, फिर इनक्रिप्ट कर रहे हैं. तो इनक्रिप्ट करने के बाद जनरेट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट. तो साइफर टेक्स्ट में हम सेम की अप्लाई कर रहे हैं या डिफरेंट की अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन वी आर डिक्रिप्टिंग दैट साइफर टेक्स्ट एंड गेटिंग एज प्लेन टेक्स्ट. So I think you guys are understanding what I want to say. So next topic is our crypt analysis. So crypt analysis, what is crypt analysis? It is generally a technique for examining the cryptographic system. So इसमें क्या होता है, ये crypt analysis, जैसे हमारे cryptographic system होते हैं उसमें क्या फ्लोज है या कहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, वो पता करने के लिए crypt analysis यूज किया जाता है. Crypt analyst. What is crypt analyst? The people who study about crypt analysis is called crypt analyst. And crypto system. So crypto system basically it won't come into your syllabus, but then also if you can want to study, then I can say a crypto system is a structure or scheme consisting of set of algorithms, जो कि मतलब तुम्हारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर सके और इनकोड और डिकोड कर सकते हैं. तो क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, क्रिप्टो सिस्टम एक स्ट्रक्चर या स्कीम होता है जिसमें कि बहुत सारे एल्गोरिदम, सेट ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए या इनकोड या डिकोड करने के लिए यूज किया जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट सीजर साइफर. सो व्हाट इज सीजर साइफर? सीजर साइफर इज नथिंग अ सब्स्टिट्यूशन साइफर. In this cipher there is an encryption key 3 plus 3, means it's a default key. I already told you that in some algorithms there will be a key provided by the algorithm, or in some algorithms you have to give your own key. So in this Caesar cipher the default key is plus 3 for encrypting, and for decrypting there is a default key of minus 3.
So in this diagram, as you see, for x, so for x there will be y, the next three term y, z, a. So a will be your that encrypted message. For y, b, z, c. Just like similar that for a plus 3, so b, c, d. So d is there. So then c, for C, D, E, F. So F is there. So just like that, you are just encrypting by plus 3 key. So by the example you can easily understand. So here is the example of Caesar cipher. Just first I will tell you, in Caesar cipher basically you have to write that A to Z, otherwise it's your means for your helpful I written this A to Z alphabet. Okay, so basically you in cryptography you are starting from 0, don't start from 25th, don't start from 1. सो सीजर साइफर में क्या होता है कि हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं. फॉर द ए वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 1 से. सो टोटल हमारे पास अल्फाबेट 26 होते हैं, तो हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा. क्रिप्टोग्राफी में हर एल्गोरिथम में 0 से स्टार्ट करते हैं. सो कीप इट इन माइंड. So example is there. I have written all the alphabets and 0, 1, 2 to 25th I have written. So you can easily plus 3 and minus 3 that. So for example I have keep hello for an example. So hello is our plain text and Caesar cipher we have to convert it into Caesar cipher. Okay, so plain text Caesar cipher we don't know. Key for encryption is default 3 and key for decryption is minus 3. So H, first is our H. So H is 7th number. So 7 plus 3 10. So K. So K is there. Okay. Then E. For E 4th number is there. So plus 7 H. So H is there. Then L. L is on our 11th number. So 11 plus 3 14. So 14 O. Then same again L. Then so O. Then for O. O plus 3 14 plus 3 17. So on 17th R is there. So R. So your cipher text is KHOOR. So our next topic is cryptography methods. So there is symmetric key and asymmetric key. So what is symmetric key? In symmetric key there is a one single key for both encryption and decryption. We are both using that in symmetric key. Okay. So examples of symmetric keys means in which algorithm we are using symmetric keys: Blowfish, AES, RC4, DES, RC5 and RC6. So in upcoming topics we are going to study a detail about these algorithms, and we are using symmetric algorithm in AES 128 also, 192 and 256. But generally AES 192 is not in our syllabus, so I am not going to tell you about. But if you want you can contact me, I will give you the information about AES 192 also. So our next topic is asymmetric key. In asymmetric key there is two key, public key and private key. Means there is two different keys there in asymmetric key. In symmetric key there is only one key, but in asymmetric key there is two key, public key and private key. And without this key we can't encrypt or decrypt the message. Basically the example is just like a normal example is your Gmail. For Gmail the public key is your username xyz@gmail.com, anything, and your private key is your password. So you can share your public key with anyone, but your private key you can't share with anyone. You have only sender will know, and when it will receive to receiver, there will be their public key and their private key. By help of that he can use that, he can open that message. And there are types of algorithm which we use asymmetric keys: Diffie-Hellman, ECC, E1-Gamal, DSA and RSA. So what are the applications of cryptography? So there are some applications like e-commerce. In ATM we are using, for email passwords, electronic voting, e-payment, defense services, in defense also we are using,
and securing data. Securing data means it will come in steganography and all that you are going to study in next videos. So basically that's it. Thank you. So यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है. आई होप आप सबको ये टॉपिक पसंद आया हो. ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आ सकते हैं. सो थैंक यू गाइस, होप करता हूँ आपको पसंद आया हो ये वीडियो.